extend a warm welcome to our distinguished speakers. I would like to call Mrs. Shalini Mittal, founder and CEO of Crafters Corner. Can we have a huge round of applause for Mrs. Shalini? Shalini Mittal has 9 years of consulting experience with Unilever. Passionate about growth, she has completed certifications in business management, automation, and communication. Recently, she also led the AI Summit as marketing consultant, engaging 500 plus entrepreneurs. Next, I would like to call Mr. Samarth Gupta, Director of Nirmal Packaging Systems Private Limited. Can we have a huge round of applause for Mr. Samarth? Samarth's journey began not in boardrooms, but at his father's design table, learning the value of customer trust. A gold medalist packaging technologist and double gold medalist MBA, he blends deep technical expertise with sharp business insight. Over the past 20 years, he has partnered with over 550 companies across India and abroad. Can we have a huge round of applause for both of them? So, hi everyone. Thank you so much for having us here. So, my name is Shalini Mittal. I'm from Crafters Corner. To be precise, this is the brand which caters to anything or everything which you need for your gifting requirements. I would say we are the backbone of the entire gifting industry. Whenever you're looking for solutions which are hobby based or completely domestic, we are the only go to solutions for all of you. I know it's so difficult for people to figure out to have bigger commercial machines in their small spaces. There are a lot of people who are into gifting and do not have any stores, do not have big godowns, do not have big spaces. So there comes at the rescue Crafters Corner, because we deal into all kind of small hobby machineries and hobby gadgets, which helps you reducing your time from anything from hours to seconds to convert your product. And I know it might be confusing for a couple of you, so just to let you know, if you need to fold your paper without any cracks, we are the solution. You need to cut the tags within just 1 second, we are the solution. You needed to write down the names of somebody within some seconds, we are the solution. So anything or everything related to gifting is something you can look for Crafters Corner. This is an 18 years old brand, and I'm super excited today to have my buddy Samarth today sharing this space with me. I won't be taking too much of time introducing myself. Maybe we'll do it while we are having chat over it, right? So I'll give the chance to Samarth to talk a little about himself and introduce himself. थैंक यू शालिनी जी, सो गुड टू नो अबाउट यू। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं शाम को 8 पीएम की जब चाय लेता हूँ अपने गिफ्ट्स कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो वो जो मेरे साथ अपने मन की बात बताते हैं वो शेयर करता हूँ आपसे, फिर अपने बारे में बताऊँगा। एक लाइन आती है कि यार, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि प्राइसिंग ना मैटर ही नहीं करे। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि देखने में लगे कि ये कोई फॉरेन का ब्रांड है। और अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अ, अपने फादर को हाथों से पैकेजिंग सैंपल्स बनाते हुए देखा, और वहाँ से जब उनको उसके लिए प्यार मिला, उसके लिए इज़्ज़त मिली, तो मेरा इंटरेस्ट आया पैकेजिंग में। आगे चलकर मैंने पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सीखी, मैनेजमेंट एजुकेशन ली, दोनों जगह से गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकला। पिछले 20 सालों में जब गिफ्टिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोज़ली काम किया, ये नज़र आया कि हर कोई व्यक्ति सुंदर पैकेजिंग बनाने का सोचता है, लेकिन क्या सुंदर पैकेजिंग बनाना बहुत है? क्या उतने से काम हो जाएगा? तो मैंने इस पर मेहनत की है, इस पर काम किया है, इसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, और उसमें से भी जो टॉप 2 या 3 चीज़ें मेरे लिए काम करीं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। परफेक्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो हम दोनों के बीच में रहने वाला है, और हम मेक श्योर करने वाले हैं आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का जवाब, और उसके अलावा जो हमारे पास है आपसे शेयर करने के लिए। तो समर्थ, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस वन थिंग विद यू। पहले एक टाइम होता था पैकेजिंग का मतलब होता था खाली एक ब्राउन कलर का डब्बा, राइट? देयर वाज अ टाइम जब पैकेजिंग का मतलब है कि कहीं से भी करोगेटेड बॉक्स ले लिया, 1 प्लाई 2 प्लाई, एंड यू पैक एनीथिंग एंड यू सेंड इट आउट। बट आज की दुनिया में जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स,
Especially, how many of you know that unboxing videos are so important for all of us, when we go on Instagram, right? Right. So when you go to unboxing videos, at that time, if you give that brown color ka dabba, and sorry to say this thing, that brown color ka dabba at times stinks, that you go to your washroom and close the door thinking that the smell is coming from the washroom, right? So it has completely changed the meaning of the packaging. And I believe Samarth has been able to crack that packaging code, and he's been able to build that packaging with his products. So I would request Samarth to talk a little bit about his firm, let you know what is he into and how does he take care of these aesthetics when it comes to Instagram and unboxing of those beautiful bags. सो इस साल मेरी कंपनी निर्मल पैकेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड अपना 47th बर्थडे मना रही है That's wow. और पिछले 15 साल से ऊपर मैंने 550 से ज़्यादा ब्रांड्स को हेल्प किया है टू सेल मोर, टू चार्ज मोर एंड टू सेव मोर। आपको एक छोटा सा इंस्टांस देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी नई जगह जा रहे हैं और वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या आप ये चेक नहीं करते कि क्या ये जगह या ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं? Absolutely. Trust is the first thing we look forward to. या सो दिमाग सिर्फ आधे सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि ये जगह मेरे लिए सही है या नहीं, ट्रस्ट है या डाउट है। Absolutely. सेम सबकॉन्शियस स्कैन मैंने रियलाइज किया कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ भी करता है और जिस मोमेंट उसको डाउट आ गया कि कुछ शेकी है, उस मोमेंट पर सेल चली जाती है, साइलेंटली और इंस्टेंटली। Absolutely. That's so true. So again, coming back on my core topic, which is how to build trust in packaging. मेरे हिसाब से पैकेजिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कोर एलिमेंट जो है वो ट्रस्ट है। अब टू ओवर टू यू शालिनी जी। Thank you. So I think what Samarth is saying is very valid. जैसे हम डब्बा देखते हैं हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी कैसी है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट पैकेजिंग देखते ही आपका ध्यान टेप पे जाता है, आपका ध्यान लेबल्स पे जाता है, आपका ध्यान प्रिंटिंग पे जाता है और जैसे ही आप पैकेजिंग का डब्बा खोलते हैं आपका दूसरा ध्यान जाता है उसके अंदर पड़े हुए मटेरियल में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई थैंक यू टैग या टिश्यू लगा है नहीं लगा है, थैंक यू के स्टिकर्स लगे हैं नहीं लगे हैं। और ऑन द टॉप ऑफ इट there are people like we do it all the time whenever we are selling our DIY kits. We are into DIY. What we do is just a tip for everyone. How many of you are into some of your own packaging or some of you are gifting? How many of you here? No one. Okay. Couple of people. Perfect. I just want to give you one thing. What we always do whenever we are packaging a product, we always buy some perfumes extra. And what we do is we always spray some perfume inside the box, especially with those crinkle paper. Because even if you are not able to succeed on the box or if you're not able to succeed on your tags, the moment somebody will open your box and the first thing you get is the smell, you're lost in that smell and you are like, okay, the brand is good, bahut acha smell aaya. And it happens even when you are walking by a booth and if you get to see or if you get to smell something, you stop for a moment over there. So just one thing I want to let you know that there are many things, as we know that there are multiple senses we control through packaging, like your looking sense, your smelling sense, your hearing sense, everything. So if you can't control anything else, by using your perfumes in your gifts is one way you can actually control the smelling sense. Not only that, when it comes to packaging, evolving packaging, everybody who is looking towards your Instagram, anybody who is looking towards your social media where you're opening a box and letting them know this company has sent me this box for a collaboration. जितने भी लोग वहाँ पे डब्बा खोल के दिखा रहे हैं, सबको ये जानना है कि डब्बा कितना खूबसूरत है और सबको ये देखना है कि कंपनी ने भेजा कैसा है। आज की डेट में nobody wants to see those bubble wraps. Nobody wants to see those brown boxes. हर बंदे को एक crisp डब्बा देखना है. And I know this happens with, I know you are into boxes for Haldirams and Domino's as well. Imagine your Domino's pizza coming in a brown box and having, that brown tape. You would never be eating that, right? In fact, no, the customers today, they give me a mandate that I have to develop such a box which is Instagram worthy. Absolutely. So making an Instagram worthy packaging is a prerequisite today. Yes. Yes. क्योंकि अगर पैकेजिंग
इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है, सुंदर नहीं है, तब भी इंस्टाग्राम पर जाएगी वो। Correct. और तब क्या किस तरह का फ़ील लेके आएगी वो कस्टमर से, ये हमें देखना है। That's so true. And also with this topic, I just want to let everyone know that if you are sending, how many of you courier your boxes? कितने लोग courier करते हैं? How many of you into couriering, right? I just want to let everyone know that if you are sending something to someone, the product is secondary. The primary is always the packaging, because the person, when they're receiving, they're only looking the box. This happens with us also. Imagine if you're going to a departmental store and everybody knows that you have to buy maybe a toothpaste, and even the toothpaste box, अगर वो पिच का है, आप वो नहीं उठाते हो, and you change it. You go to the supermarket, you go to the shelf and pick up another toothpaste का डब्बा. For what? Because you have planned, when I'm going to throw that dabba in dustbin, my dabba has to be perfect. I mean, the packaging plays so much important role in your product that फेंकने के लिए भी आपको डब्बा perfect चाहिए. Forget about use करने के लिए. And I think I would just add one more thing, and then over to Samar, that when you receive a good dabba, you don't throw it for years. You don't throw it for months. What do you do? You're storing your jewelry, you're storing your raddi paper at times, you're storing your shoes, you're storing so many things. So, and that packaging continuously reminds you of that branding. And I think, Samarth, you have really cracked the code with your packaging and your designing. We would love to know a little bit about you from that packaging perspective. Okay, so let me decode how I go about designing the packaging. And how do I go about inculcating the trust element? How do I go about highlighting the trust element in packaging? So I have developed a framework which I call as a KLCT framework. अब ये KLCT क्या है? ये एक एक्रोनिम है for knowing, L stands for likability, C stands for credibility and T stands for trust. तो आप इसको इस तरह से देखिए, अगर मुझे किसी का ट्रस्ट जीतना है तो सबसे पहले ही शुड लाइक मी, और ही शुड सी मी एज अ क्रेडिबल पर्सन. वो मुझे क्रेडिबल पर्सन कब तब देखेगा जब वो मुझे लाइक करता है, लाइकेबिलिटी है. लाइकेबिलिटी तब होगी जब वो मुझे नो करता है, मैं उसके वर्ल्ड में हूँ. तो पैकेजिंग को ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रस्ट विन कर सकती है. Do you want me to elaborate on this? Yeah. Guys, do we need little bit more? जैसा ऑडियंस चाहेंगे हम वैसा करेंगे, राइट? ओके, सो आई थिंक यू कैन गो अहेड एंड एलाबोरेट अ लिटिल बिट मोर. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहला है के नो. मुझे अपनी पैकेजिंग ऐसी बनानी है कि वो नज़र आए. जब तक वो नज़र ही नहीं आएगी तो कैसे लाइकेबिलिटी होगी, कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी, और ट्रस्ट फिर कैसे आएगा? अब नज़र आने के लिए जो जो करना है वो मेरा काम है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर शेप्स, देर आर डिफरेंट, अगर आप सपोज कीजिए आप किसी डीलर के यहाँ जाते हैं और आप वहाँ पर देखते हैं कि आपके बॉक्स बाकी ब्रांड के बॉक्सेस के कंपैरिजन में डल नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द मोमेंट दैट यू नीड टू रियलाइज कि यार मेरा ना बॉक्स नो नहीं होने वाला, ये नज़र नहीं आने वाला. सो यू नीड टू प्ले विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, क्योंकि सारे रेक्टेंगल बॉक्सेस सेम साइज के सब एक जैसे लगते हैं. एक और, जब आपका बॉक्स नज़र आ गया, जब आपका बॉक्स ने अटेंशन ग्रैब कर ली, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेजिंग की है कि वो लाइकेबल बने. Correct. मैं लाइकेबल कब बनता हूँ? जब मेरे साथ सामने वाले का कोई इमोशनल कनेक्ट जुड़ता है. इमोशनल कनेक्ट कहाँ से जुड़ेगा? उसके बहुत सारे तरीके हैं. वन ऑफ द वेज इज स्टोरी. कहानी की खास बात ये होती है कि कहानी ना चिपकती है, स्टोरी स्टिक्स. तो मेरा ग्राफिक ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ कस्टमर के इंटरनल वर्ल्ड को टच कर जाए. That's so true. या सो स्टोरी इज वन ऑफ द वेज ऑफ बिल्डिंग लाइकेबिलिटी. अनदर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको. मैंने अभी रास्ते में आ रहा था तो आई सॉ द जोमेटो गाय गोइंग, एंड उसके डिक्की पर लिखा हुआ था इस डिक्की में टिक्की है. मुझे याद हो गया, वो लाइकेबिलिटी बन गई. वो अपनी पैकेजिंग के साथ भी ऐसा ही करता है, बड़े फनी तरीके से उस पर लिखता है, सच दैट उसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है कस्टमर के लिए, लेकिन एक लाइकेबिलिटी बन जाती है, इमोशनल कनेक्ट बन जाता है. पैकेजिंग पर अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम पाप कर रहे हैं.
अगर हम सिर्फ अपना ब्रांड डालकर प्रोडक्ट की फोटो डाल के भेज दिया तो कनेक्शन नहीं बनेगा। That's so true. That's so true. In fact, the time I would like to just elaborate a little bit more. The time has really changed. It's not the same time as it used to be कि प्रोडक्ट अच्छा है बाहर से कैसा भी होगा तो चल जाएगा आप भेज दो क्या फ़र्क पड़ता है यू आर डिलीवरिंग क्वालिटी आई बिलीव इफ़ you just see the amount of money spent for a watch, maybe it's a Omega or it's Rolex or any other watch for the matter of fact, अगर आप देखो तो उसके डब्बे में भी एक अच्छा खासा proportion they spend to make sure that it's beautiful. In fact, if you look at the guinea also, if you look at the silver coin also, at times it happens. And in my case, envelopes. How many of you have been buying those envelopes? So, एक रुपए के सिक्के वाले envelopes कितने लोग खरीदते हैं, right? Let me tell you one thing. My students have been selling. Now, I know it might be a shock for someone, but that's so true because it's happening. Our students have been creating envelopes not for 5 rupees, not for 10 rupees, not for 20, not for 30, not for 50, for minimum 300 rupees. I know there are people who might be thinking 500 रुपए डालने के लिए यार 300 रुपए का लिफाफा कौन खरीदता है, but that's a fact. To show them that you care for them, people are buying envelopes and not just one. We recently had an exhibition where people were buying like 200 envelopes, 500 envelopes because they want to tell their customer that this much we care for you and we have spent enough time to curate this envelope. It is not a 1 रुपए का सिक्के का envelope which you go to a local market and you get it. You have spent time. So wherever you want to tell people कि हमें आपसे प्यार है या जहाँ पे भी आपको लोगों को बताना है कि I really care for you, एट दैट टाइम पीपल ओनली फॉल फॉर हैंडमेड. आपने देखा होगा कोई भी साड़ी महंगी होती है तो कभी नहीं लिखा होता कि मशीन मेड. कोई चूड़ी महंगी होती है तो कभी नहीं लिखा होता मशीन मेड. कोई ज्वेलरी महंगी होती है तो कभी नहीं लिखा होता मशीन मेड. कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो हमेशा एक ही बात लगाता है उसके आगे कि मैडम ये हैंडमेड है. सो दैट इज हाउ द पैकेजिंग हैज चेंज्ड, दैट वेयर पीपल आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, नॉट लाइक कि एक क्लिंग रैप किया and you put in a डब्बा and you send it out. People spend time. एक बंदा उसको लेगा, एक बंदा उसको टिश्यू में रैप करेगा, फिर एक थैंक यू का स्टिकर लगेगा, फिर थोड़ा सा और कुछ एलिमेंट ऐड होगा और कुछ फ्रीबीज ऐड होंगे बिकॉज एवरीबडी लव्स फ्रीबीज. जितने पैसे दिए अगर उतने का सामान मिले तो ब्रांड अच्छा है, पर जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा का सामान मिले तो ब्रांड बढ़िया है. और अगर जितने का पैसा दिया उससे ज़्यादा का सामान मिला और सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई अच्छा लगा तो ब्रांड भी अच्छा है और आदमी भी बढ़िया और आदमी के साथ काम करने में भी मजा है. सो आई एम श्योर यू नो पैकेजिंग इज नॉट जस्ट डब्बा, पैकेजिंग इज नॉट जस्ट द पेपर, पैकेजिंग इज वे मोर. And when we go forward down the line 5 years, how do you see Samarth packaging getting better and better? And what are the changes do you see this market is going to have? आजकल बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। मैं वापस अपनी पुरानी वाली बात पर आ रहा हूँ। I love the word खतरनाक. बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये है कि मुझे बस सुंदर पैकेजिंग बन जाए मेरी। Correct. मेरी पैकेजिंग अच्छी लगे। अगर वो अच्छी ही लग रही है, सुंदर ही लग रही है, तो क्या जो इन्होंने बनाई थी, जो मेरा कॉम्पिटिशन है, क्या उसकी पैकेजिंग सुंदर नहीं है? तो मेरा माल कैसे बिकेगा? मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे इस खतरनाक ट्रेंड से बचना है कि मुझे सिर्फ़ सुंदर ही पैकेजिंग बनानी है। ये बहुत मैं काउंटर इंट्यूटिव बात कर रहा हूँ। Hmm. जब आप पैकेजिंग बनाने के लिए बाज़ार में जाते हैं, तो आपका पहला ध्यान रहता है कि यार पैकेजिंग सुंदर लगनी चाहिए। Correct. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये इनफ नहीं है। Hmm. तो आगे चलकर जैसे-जैसे मेरे जैसे लोग एक्टिव हो रहे हैं इस फ़ील्ड के अंदर, तो हम लोग तो इस पूरे लैंडस्केप को चेंज करने वाले हैं। Hmm. पैकेजिंग का ट्रेंड जो आने वाला है, वो आने वाला है बात करने वाला। मेरा बॉक्स मेरे कस्टमर से मेरी जगह बात करेगा। मैं अगर खुद खड़ा होकर रिटेल स्टोर में माल बेच रहा होता और मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँ, तो वो काम मेरा बॉक्स करेगा। Hmm. ये ट्रेंड है। That's so powerful. एक और बात मुझे आगे बोलनी शालिनी जी, आपने अभी मेंशन किया था कि आपके स्टूडेंट्स हैं। मैं ये बात नहीं समझा, आप क्या करते हो? अच्छा, ओके. सो आई थिंक आई हैव टू टेल यू अ लिटिल बिट. सो क्राफ्टर्स कॉर्नर में हम लोग जो लोग गिफ्ट पैकेजिंग में हैं, उनके लिए वी एक्ट एज़ अ बैकबोन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी 100 कार्ड्स का ऑर्डर आ जाए, तो जनरली हम लोग पहले कैसे करते थे, कागज़ लिया और उसको फ़ोल्ड किया. बट कितने लोगों को पता है कि जब आप कागज़ को लेके जस्ट फ़ोल्ड करते हो, तो कागज़ में टेढ़े-मेढ़े क्रैक्स आ जाते हैं, राइट? एंड हम सोचते हैं बस इससे अच्छा फ़ोल्ड तो हो ही नहीं सकता. So there comes Crafter Corner to your rescue. We manufacture boards, which is a small plastic 12-inch board. You keep the paper on the top of it.
You score a line and it's ready to go. No cracks, nothing. That's what we do. We also have gadgets. You won't believe it, but that's the kind of precision people need. We manufacture special Teflon bone folders. अगर आप उसको कागज को फोल्ड करोगे तो कागज पे कोई शाइनी मार्क भी नहीं आएगा. How many of you notice कि जब हम जीन्स के ऊपर प्रेस करते हैं तो एक शाइनी प्रेस का मार्क आ जाता है? कितने लोगों ने देखा वो जीन्स में या शर्ट पे, राइट? You guys have seen that. I see a hand there. Okay, thank you. So this happens with paper also. When you're folding the paper and when you're trying to we call it burnishing, हम उसको burnishing बोलते हैं. So when you're trying to burnish the paper, पेपर के ऊपर वो बहुत सारे चमकते हुए साइन आ जाते हैं and you won't believe it is a pop. It is a sin in paper crafting industry to see that shine mark also. So we have special gadgets where you fold with that gadget and there is no shine mark which comes. And for all the small businesses, like I have a lot of women into small businesses and they do not have the capacity of ordering things in MOQ. How many of you feel कभी कभी बहुत unjustified होता है, बहुत ही नाजायज होता है, कोई आपसे बोल रहा है 100 पीस ले लो, 500 पीस ले लो, 1000 पीस ले लो, and not everybody wants to buy 100 piece, 1000 piece. There comes Crafters Corner where we manufacture small punches. You simply keep the paper and within a second you get tag, within a second you get a circle, within a second you get square. No more measurements with the scissors, no more measurement with that purana futta. और टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट फुट्टा डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट मेजरमेंट कि अप्सरा की मेजरमेंट अलग होगी, नटराज की मेजरमेंट अलग होगी, क्या हमलिन की मेजरमेंट अलग होगी. सो यू आर लाइक ये 2x2 यहाँ पे 2x2 लिखता है पर यहाँ पे तो 2.25x2 दिखता है. So we manufacture all those gadgets for small businesses, those who are operating things from their home, their houses or their personal spaces, so that they don't have to run and they don't have to really deal with that chick of people कि मैडम हम नहीं देंगे, 500 लेना है तो लो. You know how people are like, मैम वांदा नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो 500 से कम नहीं लगने का है. So all those people who have been hearing these sounds, these noises in the market, we are the one who takes care of them, and that's how we play a role in this industry. So what I got is that you help those who are into crafting business Yes. and primarily small scale crafting business Yes. So small and scale. hobbies also. Yes. And also we are with the people, for example, recently we did have a tie-up with Bikaner as well, where Bikaner made all their gift hampers of Valentine's using our punches only. So that was very wonderful to see even big brands using this. Like, to be very honest, it's what we manufacture is time saving. So if you want to save your time, whether it's small scale or it's medium scale or it's large scale, so you have to have the products which we are manufacturing. Got it, got it. So I can see a lot of synergy in what I do and what you do. So since I make boxes, so these days you were talking about trend. तो एक ट्रेंड जैसे मैंने बताया बात करने का है. अब बॉक्स पर इतनी जगह तो होती नहीं कि आप पूरी की पूरी कहानी डाल दो उसके ऊपर. Absolutely. So there, you know, we can use small tags which can hang from the box. Yes. We can use smaller stickers. We can use, printed sheets which can be folded inside the box, which can carry the owner's message to the customer that guy, man, you matter to me. आपने ये बॉक्स खरीदा तो उसके लिए थैंक्स है आपके लिए. So these kind of things, which generally people don't use in commercial packaging, now they are finding its way into commercial packaging. And इसमें मुझे लगता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिएगी. Sure. Looking forward. Absolutely. So audience, do we have any particular questions related to packaging? Otherwise, we'll just keep talking what we know. Any particular question anybody has? किसी का कोई particular सवाल? So. Now, in today's world, sustainability is very important. So when we talk about packaging, we met a guy from Bangalore who is our customer. He's looking for something which is an appealing packaging, free from plastic. So do you also take care of it when you are taking care of all kinds of packaging solutions for your customers? And how does it make a difference? Because like you said कि कूड़े में जाने से पहले भी लोग देखते हैं कि डब्बा कैसा है. But अगर कूड़े में what kind of a carbon footprint are we having for the environment, For sure. So how do you take care of it? No matter how much people talk about sustainability, somewhere down the line for sustainability, there are two factors which are very important. There are few things, as I said in my morning session also, that you will not be able to omit 100% from your life. Only thing you should do and you should consider is extending the life of the product which you're offering to your customer. So instead of using like one-time plastic and instead of using one-time usage product, you should focus on more
समथिंग एज आई मेंशन दैट आपका डब्बा ऐसा दिखना चाहिए कि बाद में उसको लगे कि भाई प्रोडक्ट तो यूज हो गया लेकिन डब्बे में भी कुछ रख लें. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकॉज generally when talk about sustainability people only think of brown color, green color, and the product which are made with jute or paper or biodegradable, but that's not true. Another factor to it is if you try and extend the life of the product which you're offering to your customer, that also caters to sustainability to an extent. However, Samarth would be the right person to talk about what kind of boxes he can manufacture for you. And those who couldn't listen to the gentleman, he's into watches and he's talking about the sustainable packaging for the watches. So Samarth would be taking up the question and answering. आपका नाम बताइएगा? Mr. Sorry? Sanjeev. संजीव जी। हाँ जी। तो ये आपके जो कस्टमर हैं, ये कहाँ पर है? Bangalore. Customer है Bangalore में है, who are actually into stationery, right? So that is one part of it. Today I'm working with the leather sector. 6 years back I was into watches, and that time I had worked 22 years at a stretch in watches. Now we are making leather watch straps for the same industry. I belong to Timex basically, so I work very closely with Fossil and all other brands worldwide. So packaging plays a very important role. We bought one this Swatch Omega watch, from Switzerland. They have duplex packaging, a very flimsy packaging. But imagine buying a watch at 25,000 rupees in their stores, where you go in the morning, they'll have the watch, and in the evening, it will be all gone, outside this watch factory. So imagine, that kind of a brand coming with this duplex packaging with a plastic window on it. So they are selling it just because the brand carries that value. Hmm. Otherwise, we have tin packaging, your pulp packaging, which also goes into this mobile packaging and watch packaging also. Then, yeah, similar packaging. So I think he's looking for an answer for the sustainable thing, right? That's what. हाँ. So, see, in my company's 47 years of experience and my personal 20 years of experience, at least in Indian landscape, sustainability is not that a big ask from the customer. That is why, at least in, such packaging which is required for, to be sold off the shelf, such kind of products, they are not, in those products, the customer does not ask for a sustainable solution, at least in, my community. However, what we have done so far in the sustainable landscape is that we have totally and completely and fully thrown out thermocol out of the packaging industry totally. So today, the kind of cushioning and fitments that we create using the corrugated fitments, they have totally replaced thermocol and foam. So, this gives me a peaceful sleep at night that I am doing something good. One, for the customer, the corrugated fitments, they are cheaper in comparison to the thermocol fitments. They take, at least, they are roughly 30% cheaper, by the way. They acquire 50% less space in my customer's factory. And EPS, which is the thermocol, it is highly inflammable. तो वहाँ से भी बचाता है. चौथा सबसे बढ़िया चीज़, जब कस्टमर उसको खोलता है, क्योंकि corrugated fitment प्रिंटेबल है, हाईली प्रिंटेबल है, तो वो पैकेजिंग का ही पार्ट लगता है. तो मैंने अपने स्तर पर इतना किया सस्टेनेबिलिटी के लिए. डिस्प्ले वैल्यू जहाँ पर चाहिए वहाँ पर मेरे पास ना तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया कि जिसमें कस्टमर आगे बढ़ के मांग रहा है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए डिस्प्ले वाली पैकेजिंग के लिए. तो मुझे लगता है मैंने आंसर आपको नहीं किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मुझे लगता है. So I think to be very honest, सच्चाई ये है कि हम सभी अभी भी वेट कर रहे हैं हर जगह पे सस्टेनेबिलिटी को लगाने की, बट हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेगा या कोई हमें इसका ऑल्टरनेट देगा या कोई आके हमें सिखा के जाएगा कि देख भाई इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो, और जिसमें हमारा ये सवाल नहीं होगा पर ये तो महंगा पड़ेगा. Because the moment we talk about sustainability, definitely it comes at a price which may not be very affordable by the customer. Because at the end of the day, if you have set a particular price in the market, you have to deal with it. And at that time, it's person's choice whether he is really looking for sustainability
or he is okay to get a little life extended to what you're doing. And I think down the line, an year or maybe two, we would be having better solutions coming in all the industries. So we are waiting for people who are scientists, people who are actually dealing with all the things, and especially the students who keep doing some startups to really help us. I think it's not us as millennials. We have more Gen Zs coming in, taking care of all these things because they are really very awake when it comes to Mother Nature, when it comes to taking care of all the things, making plastic absolutely gone out of the industry and got out of the environment. They're more conscious about it. We are still using a lot of things which are not really eco-friendly, but we are trying slowly, gradually. But with the new generation, they're more smarter than us, and they are more conscious, and they're accepting happily what we are offering them. So I think let's wait for some more time and something to happen over it. I mean, honestly, we don't have an answer to your question really, but we tried whatever we knew on the topic. So take your speakers a little bit less knowledgeable on that. So, please, sir. Important that we start thinking in that direction. And Absolutely. solutions have to come from this generation now. Absolutely. For the years to come, for the people to come, for the generations to come. Because unless we take an initiative right now, we cannot depend on others to bring solutions. For sure, for sure, for sure. I think you have to only bring this change, and I'm sure that in next 2 years you would bring something better than what you are doing right. For sure. I Thank mean, you so much. we just need the wishes and we need some knowledge as well. We got to work on this. Thank you so much for giving this spark, and we make sure that we answer your question in the next speaking session only. Thank you We so will do much. that. Thank Thank you. Okay, anybody has a question from the audience, or we can just kind of go ahead. Anybody, you guys are sitting here, कुछ particular जानना चाहते हैं आप, कुछ particular ऐसा जो आपके दिल में है, आपके कोई सवाल का जवाब चाहिए. We'll be very happy to answer. Yes, sir. So myself, Anup, I came from an industry called, we are making millet biscuits, ma'am. Millet biscuits, okay? Yeah, but our products are premium, but when we are packing it into a PET bottle, it doesn't look premium, ma'am. Huh. So when we go to a manufacturer or some Sadar Bazaar and all, so they can इतना minimum लगेगा 1000 boxes minimum 500. जैसा आपने बताया था, हम उसको how my premium products look premium in packaging, मैम वो कैसे कर सकते हैं हम आपके साथ में मिलके मैम वो. Okay. So I believe if you do not want to, okay, so उनका question है कि कैसे हम अपने millet biscuits को आप premium show off कर सकते हैं, right? We are having premium biscuits, but we want to show it also premium Correct. because packaging came like as role of packaging in enhancing the. Yeah, I get it. So I think half of the answer I'll do, Samarth, and half of the answer you would be able to do better than me because Samarth is an expert when it comes to packaging. From my side, if I am making a biscuit, if I was you, if I was making biscuits, probably as Samarth mentioned, I would try to lift that biscuit more with stories than actually only with the packaging. I would probably go ahead and incorporate all the elements. जैसे आपने मुझे बोला आप प्रीमियम बिस्किट बनाते हैं, but there are so many people sitting here, उनको शायद प्रीमियम से जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं समझ आया होगा, या मुझे भी नहीं समझ आया होगा कि प्रीमियम से आपका मतलब क्या है. क्या वो महंगा है, क्या उसमें महंगे ड्राई फ्रूट्स लगे हैं, क्या लगा है. So We are adding value to it, ma'am. Like usually people don't do the initial traditional processing. We do soaking, sprouting, then drying, and then we are making it. ग्रेट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. यही बोलना चाहती थी मैं आपसे कि जो आप करते हैं ये आपको नहीं बताना, ये आपके बिस्किट को बताना है, जो समर्थ बता रहे थे. जब आप पैकेजिंग बना रहे हैं तो आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए आपके बिस्किट्स के साथ में, जहाँ पे आपका हर बिस्किट बोले कि मुझे ऐसे बनाया गया है, मुझे पहले सोक किया गया है, उसके बाद मुझे ड्राई किया गया है, मुझे स्प्राउट किया गया है, और उसके बाद ये चर्न करके चूरा बना के एंड देन पेस्ट बना के एक बिस्किट बनाया गया है. तो आई थिंक इफ यू डू दैट, not even buying the tin boxes, not even buying those boxes, what you're doing. And also one more thing, there are so many other ways of you to pack those biscuits, like maybe wicker baskets. You can always do that. Maybe butter papers, maybe I don't know if you know the parchment paper. You can also do the parchment paper, which is like one of the baking papers. You can do so many different things with that, and you can also get those printed. Have you seen those wedding cards? वेडिंग कार्ड्स के अंदर एक पर्टिकुलर पेपर होता है जिस पे प्रिंटिंग होता है. दैट पेपर इज कॉल्ड पार्चमेंट पेपर, एंड दैट पेपर इज ऑल्सो यूज फॉर पैकेजिंग बाय many brands. So that is one thing which you can incorporate. And when a person opens that biscuit and if they get to read the story what you were just sharing with me, I think half of your problem is done and the value of your biscuit has already doubled up. Rest, bahar ka packaging would be talked about Samarth because he knows much better than me on that topic. पहली बात तो आपने जब अपनी बिस्किट की स्टोरी बताई तो
हाफ ऑफ मी वाज ऑलरेडी सोल्ड। Yes, मुझे मन किया कि वो बिस्किट मुझे मिल जाए। absolutely. Same here. ये पावर है स्टोरी की। ये इसको लिवरेज करना ही पड़ेगा। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, सच में सेकेंडरी है। उसके लिए अलग तरीके के क्वेश्चंस भी हैं उसके लिए। आपका क्या प्राइस पॉइंट है? आपका कस्टमर कौन है? आप किसको माल बेचना चाहते हो? वो कहाँ से उठाता है उस प्रोडक्ट को? इन सब चीज़ों पर और इसके अलावा और 10 चीज़ों की पर ये जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तब निकल के आएगा कि क्या होना है। तो मैं इधर ही हूँ और आई वुड वांट टू चैट विद यू ऑन दिस। आप मुझे अभी इस यहाँ से जब मैं नीचे उतरूँ मुझे मेरे साथ बैठिए एंड विल डिस्कस अबाउट इट। And again, I say, आप जितने भी brands देखेंगे, the brands which are making premium thing, they are always adding things, handmade packaging, handmade biscuits. So if you add this word wherever you have actually done it handmade, the value of your product will go high. Because as I always tell my students always ask me, Dee, you have told us how to make these envelopes, but I don't know how to price them. I don't know how to sell this product. Why would somebody buy for 300 rupees? Why would somebody buy for 200 rupees? So I always tell them one example. We are a beautiful country and we have a beautiful power called negotiation. If somebody offers a product for 300, we want it for 200. Natural. If somebody offers for 200, we want it for 100. That's natural. Somebody says 100, we want it for 50. That's natural. And somebody says 10, then we want it for 5. And the best part is we say free. Then they say, I want 2. So there is no end to negotiations, to be honest. So it's you who decide the price, not the customer. You need to decide that my product is worth this much of amount and I'm going to be selling at this amount, and you need to figure it out now. What do I do? मैं क्या करूं कि मेरा ये बिस्किट 500 में बिक जाए? That should be the thing. कितने का बिकेगा is not the question. The right question would be for you is, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरा ये बिस्किट मैं 500 में बेच दूं, या मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं बिस्किट 1000 में बेच दूं? For example, can I do a biscuit party? Can I tell people that, okay, if you are a biscuit lover, I'm going to be sending a whole biscuit hamper to you. I can tell you how to make a 10,000 ka biscuit hamper. That's my power. I tell my students how to sell envelopes for 2,000 rupees, 3,000 rupees, 5,000 rupees. I tell them how to hamper them. I tell them how to make a whole combination. Because let me tell you one thing. How many of you buy those Haldirams and Bikaner ke those dry fruit boxes जिसमें एक पतीसा और सोन पापड़ी और फेवरेट, राइट, जो किसी के घर में नहीं टिकती, जो सोन पापड़ी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती रहती है. That has one सोन पापड़ी, one खट्टा मीठा, one maybe biscuit, and you buy all that, right? But let me tell you, अगर आप individually उसको buy करते हो, you will never buy it. That's the power of your hamper. So even for your biscuit, you can sell that biscuit for 1,500, for 2,000 if you have a lovely bigger box and if you set them up inside it with the story, But if you're trying to sell a namkeen ka packet for 1,500, people will say, pagal hai, 1500 ka namkeen ka packet, I don't want it. So that's the power of your bigger packaging or hampering the products. Always try to give it complementary stuff along with it and decide the price point, which price point you want to sell it, not the price point what customer wants to buy. You will always find a market for 10 rupees. You will always find a market for 100 rupees, and you will always find a market for 10,000 rupees. Don't we do it? There are hotels where we pay dal makhani 1,500. There are places where we buy dal makhani for 795. There are places where we buy dal makhani for 200. And there are places where we pay 45 rupees for one plate of dal makhani, right? So it's your choice. What is your TG? ज़रा सा इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। Sure. बहुत समय लगाकर, बहुत पैसे खर्च कर जो एक बात सीखी है, वो ये कि आप अपने कस्टमर से उतने ही रुपए ले सकते हो जितने रुपए का आपने ट्रस्ट बनाया है। Absolutely. तो आपका पूरा फाउंडेशन पैकेजिंग जिसका पार्ट है, नॉट ओनली द पैकेजिंग बट उसके अलावा भी बहुत कुछ, वो क्या उतने रुपए का ट्रस्ट बना रहा है उस कस्टमर के ऊपर कि आप उससे वो चार्ज कर पाओ। तो ये भी पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है। Very well said, Samarth. I think I love that. And I'll remember this line. I'll copy this line of yours. बहुत ही बढ़िया बोला आपने. I think मैं इसको हमेशा याद रखने वाली हूँ for sure. This is coming straight from my mentor, and I am अभी I'm saying namaste to him because of this. ये इस लाइन ने मेरी लाइफ बदल दी है। That's so. Any other question we have from the audience? Otherwise, our chat will keep going around the packaging. कुछ पूछना चाहेंगे तो I'll be very happy. क्योंकि I'm sure कुछ तो ऐसा है जो आपके कान हमसे सुनना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं. तो कोई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं हमसे. And we are loving, the interactions going on. How Absolutely. engaging this is. Yes.
Do let us know how much time do we have in hand. I don't want to be taking too much of time from you guys as well. You guys have been doing an amazing job since morning. Hi, Thank you. ma'am. How much amount we can spend for the packaging? Approximate how much percentage if my product is selling in a luxury brand? In what? In If, what? if my product is selling in a luxury brand, so how much percentage of the product price which I can spend maximum in the packaging? Let's say if I am selling eco-friendly pens, so I am manufacturing eco-friendly pens. So how much amount for the packaging itself I can spend apart from the product for the I'm asking the total percentage. Like say if I'm selling my product for 100 rupees, how much percentage I need to spend maximum that I can spend for the packaging itself? बिल्कुल ना फ्री होके सोचो। बिल्कुल फ्री होके सोचो। ये ना एक हमारे ऊपर एक टेम्पलेट डाल दिया गया है कि लेबर का खर्चा 6% 7% होना चाहिए, पैकेजिंग का खर्चा 2-3% होना चाहिए, प्रॉफ़िट 10% 15% होना चाहिए। ज़रूरत नहीं है इसकी। यू शुड चेंज योर क्वेश्चन। So I think you don't understand my question. So actually for a premium brand, हाँ. how much percentage I can maximum spend? So मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर करती हूँ. आई अग्री विद हिम ऑल्सो बट आई विल स्टिल से अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं इसको ऐसे सोचती मैं कितना कस्टमर लूज करना अफोर्ड कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इज दिस बिजनेस माई नेसेसिटी और इज दिस बिजनेस आई कैन सस्टेन for 6 months without having any customer, right? As far as the packaging is concerned, you first need to figure out कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. ठीक है, अगर आप इको फ्रेंडली पेन की बात कर रहे हैं तो आर यू गिविंग देम अ 10 रुपीज का पेन और यू गिविंग अ 20 रुपीज का पेन? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड थिंग इज आपका जितने का पेन है आपका एस्पिरेशन क्या है, आप उसको बेचना कितने का चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर देर आर ब्रांड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये चीज. You talk about any brands like Gucci, you talk about LV, you talk about Prada, you talk about Versace. Let me tell you one thing, kapda is kapda. Stitching is stitching. They decide how much do they want to sell, and when you say I don't buy from them, correct, they're wanting to lose you. They decide to lose you, and that's how they decide the price. So not just choosing the customer is one aspect of it. Trying to understand that how much customer am I ready to lose is also one aspect, because when you put something premium, you do drop the people who are into masses. So you need to figure it out that are you looking forward to catering to masses or classes? Once you understand that my target is masses, then your packaging could be 5%, 10%, or maybe just 100 rupees, 50 rupees, 10 rupees, whatever. But when you think of classes, let me tell you one thing. कितनी बार हम कोई चीज इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो बहुत सस्ती होती है और हमें डाउट हो जाता है पता नहीं क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. और कितनी बार लोग ऐसी दुकानों पे एंटर नहीं करते ये सोच के कि यार दुकान महंगी लग रही है देखने में, पता नहीं इस पे माल जो मिलेगा वो मेरे मतलब का मिलेगा नहीं मिलेगा. सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपका कस्टमर कौन है. आपका कस्टमर जो सस्ता ढूंढ रहा है वो है, या आपका कस्टमर वो है जो महंगा लेने को तैयार बैठा है. लाइक देर आर पीपल हु आर लाइक मुझे एकदम क्लास प्रोडक्ट देना इस बंदे को क्योंकि मुझे इससे डील क्रैक करना है, और अगर मुझे इससे डील क्रैक करना है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने इस पे पैसा स्पेंड किया. इमेजिन यू बाइंग एन एप्पल आईफोन एंड यू हार्डली गेट यू गेट अ बॉक्स बट नोबडी थ्रोज दैट एप्पल का बॉक्स एवर. आईपैड का बॉक्स कोई थ्रो नहीं करता, एप्पल के डब्बे का बॉक्स कोई थ्रो नहीं करता. नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपके प्रोडक्ट का डब्बा कितने सालों तक या कितने महीनों तक आपके कस्टमर के कबर्ड में रहे. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज सबसे पहले आप यही डिसाइड करेंगे कि मेरा कस्टमर कौन है. मैं लग्जरी सेगमेंट को कैटर करना चाह रहा हूँ, देन आई वुड से अगर आपको पैकेजिंग में 5% लगे, 10% लगे, 20 लगे, 30 लगे, 40 लगे, यू हैव टू गो फॉर इट. आई मीन देयर इज नो फिक्स परसेंटेज, एंड व्हेन इट कम्स टू मार्जिन you will be able to make margins like 100%, 200%, 300%, 400%, even 600%, because these brands, the brands which I talked about, actually are minting money like 1000%. But they have their expenses on their marketing as well. Even for the car, when you buy an Alto or when you buy an XYZ car, the same distance is traveled from any other car from one place to another place. But then again, they choose their masses and they choose their classes. Like Mercedes choose their classes, BMW choose the classes. So you figure it out that what your pen should be selling at and who is your target market. The moment you decide, then you know मेरा packaging में कितना खर्चा लगेगा. Then you know मुझे इसको कैसे दिखाना है. And then you will tell me, मैं एक पेन नहीं करूंगा क्योंकि एक पेन कमोडिटी दिखता है. मैं 4 पेन करूंगा जिसमें मैं बोलूंगा एक इको फ्रेंडली है ऐसा बॉल पेन,
एक पेन में उसमें डालूंगा निब का पेन, एक पेन में डालूंगा जेल पेन, ताकि लोगों को कलेक्शन ऑफ पेन्स दिखाई दे एंड आई कैन से दैट लग्जरी कलेक्शन ऑफ इको फ्रेंडली पेन्स एंड देन इट बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव. The hampering which I was talking about. I hope I could answer your question to it. Great. You Thank- good insights from your side. Thank you so much. Thank you. Any other questions we are seeking, guys? Okay. Finally, a female. Hi, I'm Sumedha. I have a brand. My mom and I have a brand. One Essentials. We deal in essential oils. Okay. I had a question on packaging, especially. Upcoming season is coming, festive season, Diwali, wedding, everything is coming. I need to know the trends. I need to know what should I focus on. It's a startup. I don't know where to focus on. Should I be focusing on innovation? Should I be focusing on sustainable products? What should be my packaging so that everybody from a person who is a working class to a person who has a business, who they can target me and I can target them. So I am really not sure. I want your guidance. Okay, perfect. So, I would just like to add a little bit and then, Samad, would you like to start? Yeah. Okay. Sorry, I think it's. You start. Okay. Samad would be killing me later on. Okay, so what I would like to say here is if it was me, who was doing these essential oils, I would not be targeting at the trend. I would probably be targeting at Indian colors. To be very honest, no matter what come may, at the end of the day, when you go and buy those Bandhanwars, you will never buy white. You will never buy a black. You will only end up buying like a green and a red and it has to have a gold. So I think our Indian colors are so beautiful, so beautiful. If you look at any packaging, especially for any mithai wala, when you look for the packaging for any agarbatti wala, you will always find they're using more of the traditional stuff. And our Indian culture is so beautiful and full of so much of culture. I think that sells well because Diwali is one occasion where you are wanting to gift something someone, but it has a traditional touch, unlike Valentine. Like Valentine, you can do with a red and a green, right? It has to be like a white and a black and maybe red to it. So I believe if you're doing typically for Diwali, I would say target at Indian colors because they never go out of trend. They never get fade. I mean, Valentine could get fade for a moment, because it's white, red, and black. But your Indian colors will never go out of trend. You see Navratri colors; they always tempt us. You always see those beautiful, Garba colors. They always tempt us. So I believe any good company, especially essential oil, is such a beautiful product. To be very honest, and combined with a gold and with Indian colors, I think it's a cherry on the top. One suggestion which I may say to you is do add some kind of foiling to it. Foiling gives you a premium feel. If that is something a brand can look forward, I would say go for that. Rest, I think Samar is better person to answer. Okay. So, colors she's spoken about. Other than colors, what is your question? I want to understand what should be my packaging be. Like, should I be focusing on innovation like colors, or should I be focusing on sustainable part so that I'll market my product accordingly? That I am a sustainable brand, I have a sustainable hamper. Should I be marketing my hamper as this, or should I am a very ethnic, mural, and very festive kind of a product. So I want Yeah. to understand that. So I really Exactly. appreciate that you are, searching for ways of presenting yourself. The way I would do it. This is what you are saying is, you're coming inside out. That this is what I can do. Now let me, pick and choose what I should do. I should, I will go outside first. I will look for what my customer wants. मेरा रेजोनेशन किस कस्टमर से ज़्यादा होता है? उस कस्टमर को क्या चाहिए? क्या आपने ऐसे 10, 20, 30 लोगों से बात की है? We have been in the line for good 3 years now. अभी हमने प्रोडक्ट पैकेजिंग पूरी चेंज करी है बिकॉज हमें समझ आया, बिकॉज हमने कस्टमर से रिव्यूज लिए. ठीक है. वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट हमारा ठीक है, प्रोडक्ट हमारा स्ट्रांग है, बट पैकेजिंग वन पॉइंट इज पैकेजिंग में बिकॉज सबको सबसे पहले क्या दिखता है? पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए. सो दैट इज व्हेन वी फाइनली चेंज्ड आवर पैकेजिंग. नाउ फॉर दिवाली एंड फेस्टिव सीजन वी हैव स्टार्टेड अ न्यू पैकेजिंग. तो वो रिव्यू हमारे पास अच्छे आए हैं, हमें सबने दिया है एडवांटेज. लास्ट ईयर दिवाली में वी हैड अ वेरी म्यूरल
thing, we had Buddha diffusers. That was one of our hot selling products. Everywhere we gave to builders, to small owners, salt lamps. Salt lamps was a very trendy product for us. So वो हमने ले लिया है. अब we want to think something new. Market is changing. I want something that I want to grab and I want to deal that. So this is my Right. So, still, Abhi, there is lot to discover. There is a lot to discuss. There is lot to discover. You need to see कि मेरा कनेक्शन किस कस्टमर से बनता है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो किस तरह का विजुअल नज़र आता है, तो वो उस पर हाथ रखता है। I'll take one example. जैसे I want to target companies जो corporate gifting करते हैं. Like let's say कोई बड़ी कंपनी है, मैं उनके पास जाती हूँ कि मेरे ना ये गिफ्ट्स है, आप नॉर्मल पेन पेपर देते हो, नोटबुक देते हो दिवाली पे. I want to focus on giving something else. The essential oils, home fragrances, I want to give to a company. तो sleep cares packs to companies जो 9 to 5 करते हैं. It's a very essential product for them. तो how should I focus? मतलब उन लोगों को मैं कैसे करूँगी corporate gifts को? आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, आपको सीधा उनसे बात करनी है पहले। इस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते आप, कि वो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको किस तरह की उसने कभी पैकेजिंग देखी थी जो उससे मज़ा आया था, वो निकलवाना पड़ेगा उससे आपको। Then you should go with the different types of shapes which are available today. The internet is flooded with all the images. The only challenge comes is that the manufacturers of packaging, they shy away from picking up those those different oddly shaped boxes. So to stand out, one of the way is to go with different shapes. That is one way. Then the kind of artwork that you want to put on the box, this has to resonate with the customer, his own inside story. इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम भी बैठ कर और बात कर सकते हैं। Sure. Both of you, I would love to also send my products across to you. Please, after the seminar, I would like to say a thank you to Gifts Expo for Thank getting these gifts. By the way, it was a lovely question, and I think we need to discuss more. But they do have panels, so I think I'm sorry that we couldn't answer your question properly right now. Oh, thank you, sir. Thank you, ma'am. This was such an insightful session, such an amazing session. Can we have a huge round of applause for Shalini everyone. ma'am, Samvat sir?